Welcome to all students. Myself, O.P. Godara, Assistant Professor, Crop Physiology, Department, Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Today, we discuss about our topic is a KREBS cycle, also called as citric acid cycle and tricarboxylic acid cycle. In which the pyruvic acid प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस mainly जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका में जो pyruvic acid से का फॉर्मेशन होता है उसकी जो एंट्री है वो क्रेब साइकिल के अंदर होती है आफ्टर दैट ऑक्सीडेशन से इसका प्रोसेस स्टार्ट होती है क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज citric acid cycles or tricarboxylic acid cycles. दिस एरोबिक प्रोसेस मेनली जो क्रेब साइकिल्स है वो O2 की प्रेजेंस के अंदर कंप्लीट होता है टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर नेसेसरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स तो मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो एरोबिक प्रोसेस जो क्रेब साइकिल्स के वो कंप्लीट होती है और कई जो नेसेसरी एंजाइम्स वो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो क्रेब साइकिल्स है वो कंप्लीट होता है. Firstly, pyruvic acid react with coenzymes and NAD and it oxidatively decarboxylations. One molecule of CO2 is released and NAD is reduced. After that, pyruvic acid is converted to acetyl coenzymes. After that, pyruvic acids like coenzymes जो है इसका जो acetyl coenzymes है वो mainly ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से उसके साथ मेनली रिएक्शन करता है और मेनली जो कंडेंसिंग एंजाइम्स है उसकी प्रेजेंस के अंदर मेनली जो सिट्रिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है और को एंजाइम्स रिलीज होता है तो एस्टाइल कोएंजाइम्स condense with oxaloacetic acid in the presence of condensing enzymes and water molecules to form citric acids. After that, citric acids is dehydrated in the presence of aconitase enzymes to form cis aconitic acids. तो mainly जो citric acid है वो aconitase जो enzymes है उसकी presence के अंदर mainly cis aconitic acid के अंदर convert होता है और mainly जो H2 है वो release होता है. Cis aconitic acids react with one molecule of water to form isocitric acids. Mainly जो cis aconitic acids है वो water के साथ react करेगा and isocitric acid का formation करेगा. Isocitric acid is oxidized to oxaloacetic acids in the presence of isocitric dehydrogenase enzymes and NADP is reduced to NADPS2 in the reactions. Oxalosuccinic acid is decarboxylated in the presence of oxalosuccinic decarboxylase enzymes to form alpha-ketoglutarate acids and second molecules of CO2 is released in these reactions. Alpha-ketoglutarate acids react with coenzymes NAD in the presence of alpha-ketoglutarate acid dehydrogenase enzymes complex and is oxidatively decarboxylated to form succinyl coenzymes and the third mode of CO2 is released. NAD is reduced in the reactions mainly to NADS2. Succinyl coenzymes react with water molecules to form succinic acids. Coenzymes become free and one molecule of GDP, guanosine diphosphate is formed. Is phosphorylated in the presence of inorganic phosphates and one molecule formations of G2. Succinic acid is oxidized to fumaric acid in the presence of succinic dehydrogenase coenzyme FAD is reduced in these reactions and formations of FADS2. One mole of H2 is added to fumaric acids in the presence of fumarase enzymes to form malic acids. Malic acids in last step, malic acid is oxidized to oxaloacetic acids in the presence of malic dehydrogenase enzymes and one mole of coenzymes NAD is reduced. So mainly जो क्रेब साइकिल्स है इसका जो mainly प्रोसीजर है उसके अंदर फर्स्टली जो एस्टाइल कोएंजाइम्स है वो mainly जो एंट्री करता है और इसकी जो रिएक्ट है वो NAD के साथ होती है और जो पायरुवेट है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर mainly जो एस्टाइल कोएंजाइम्स है उसका फॉर्मेशन होता है. ये एस्टाइल कोएंजाइम्स है mainly जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स है उसके साथ एंट्री करके और जो सिट्रेट है उसका फॉर्मेशन करता है और सिट्रेट फिर यहाँ से वन मोलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज होता है और एकोनोटेट जो एंजाइम्स है उसकी प्रेजेंस के अंदर इसका जो कन्वर्जेंस है वो सिस एकोनोटेट जो कंपाउंड्स है उसके अंदर होता है.
सिस एकोनेटेज फिर अनस्टेबल रहता है, वो एक वन एस्टो मॉलिक्यूल से रिलीज करेगा, और एकोनेटेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर इसका जो कन्वर्जेंस है वो आइसोसिट्रेट के अंदर होता है। आइसोसिट्रेट से फिर जो है आपका मेनली आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर मेनली इसका जो कन्वर्जेंस है वो डिफरेंट जो सक्शनल कोएंजाइम्स है, सक्शनेट कोएंजाइम्स मेनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इस प्रकार जो मेनली जो क्रेब्स साइकिल्स है वो उसकी रिएक्शंस के अंदर मेनली H2 मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होते हैं, प्लस जो NADH2 और FADH2 मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज होते हैं, कोएंजाइम्स रिलीज होते हैं, और उसके द्वारा मेनली जो एटीपी है उसका प्रोडक्शन होता है। After that, pentose phosphate pathway, PPP or hexose monophosphate shunt, and phosphogluconate pathway, and also called as Warburg's and Dickens pathway. Mainly जो Warburg's and Dickens है उन्होंने इस pathway का डिस्कवर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो Warburg's Dickens pathway है। The pentose phosphate pathway occur in the cytoplasm outside the mitochondria, and it is an alternative pathway to glycolysis and Krebs cycles. The presence of some compounds like iodoacetates, fluorides, arsenate, etc. It's inhibits some steps in glycolysis and that lead to the alternate pathway. This pathway was discovered by Warburg and Dickens 1938. And this pathway does not produce ATP, but it produces another form of energy called reducing powers in the form of NADPH. It is not oxidized in the electron transport systems, but it serves hydrogens and electron donor in the biosynthesis of fatty acids and steroids. The pentose phosphate pathway consists of two distinct phases. In the first phase, hexose is converted into pentose, and in the second phase, pentose is reconverted into hexose. In the process, oxidation of glucose 6-phosphate lead to the formation of 6-phosphogluconic acids, pentose phosphates. Since glucose is directly oxidized without entering glycolysis, it is called direct oxidation. 6 phosphate plus 12 NADP is converted to 5 glucose 6 phosphates plus 12 NADPH2 and 6 CO2 release. It provides ribose sugars for the synthesis of nucleic acids and is also required for ischemic acid pathway. Although ATP is not produced, NADPH is produced and serve as hydrogen and electron donor in the biosynthesis of fatty acid and steroids. This pathway is also called as phosphogluconate pathway. As the first production in this pathway, phosphogluconate. After that, oxidative phosphorylations or terminal oxidations of reduced coenzymes, yeah, electron transport systems, and oxidative phosphorylations. The last steps of the respirations, the last step in aerobic respirations is the oxidations of reduced coenzymes produced in glycolysis and Krebs cycles by molecular oxygens through FAD, ubiquinones, cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, and cytochrome A3. Two hydrogen atom or electron from the reduced coenzymes NADH2 and NADPH2 travel through FAD and the cytochromes and ultimately combines with half O2 molecules to produce one molecule of H2O. This is called terminal oxidations. The terminal oxidations of each reduced coenzymes require half O2 molecules and two hydrogen atoms to produce one H2 molecules, except for flavoproteins like FAD and ubiquinones, which are hydrogen carrier. The other component of electron transport chains, cytochromes, are only electron carriers. They cannot give or take protons. During the electron transports, FAD and the iron atom of different cytochromes get successively reduce Fe2 plus and oxidize Fe3 plus, and enough energy released in some place which is utilized in the photophosphorylations of ADP molecules in the presence of inorganic phosphate to generate energy-rich ATP molecules. Since this oxidation accompanies phosphorylations, it is called as oxidative phosphorylations. One molecule of ATP with 7.6 kilocalorie energy is synthesized at each place when electrons are transferred from reduce NADH2 or NADPH2 to FAD, reduce cytochrome B to cytochrome C, and reduce cytochrome A to cytochrome A3.
Thus, oxidations of one molecule of reduced NADS2 or NADPS2 will result in the formation of three ATP molecules, while the oxidations of FADS2 led the synthesis of two ATP molecules. According to the most recent finding, although in eukaryotes, terminal oxidations of mitochondrial NADPS result in the productions of three ATP molecules, but that of the extra mitochondrial NADH or NADPS yield only two ATP molecules. Therefore, the two reduced coenzyme molecule NADH produced per hexose sugar molecules during glycolysis will yield only 2 into 2 equal to 4 ATP molecules instead of 6 ATP molecules. Complete oxidations of glucose molecules hexosugar in aerobic respiration result in the net gain of 36 ATP molecules in most eukaryotes. One glucose molecule contains about 686 kilocalorie energy, and 38 ATP molecules will have 273.6 kilocalorie energy. Therefore, about 40% energy of the glucose molecule is utilized during the aerobic breakdowns and the rest in the lost at heat. Since a high amount of energy generated in mitochondria in the form of ATP molecules, they are called powerhouse of the cells. ATP molecules contained energy in a terminal pyrophosphate bond. Was these energy-rich bonds break, energy is realized and utilized in driving various their metabolic process of the cells. Difference between oxidative phosphorylations and phosphorylations. Mainly oxidative phosphorylations it occur during respirations, but phosphorylations occur during photosynthesis. In oxidative phosphorylations occur inside the mitochondria in the membranes of Christie, but photophosphorylations it occur inside the chloroplast in the thylakoid membranes. In oxidative phosphorylations, molecular O2 is required for terminal oxidations. In photophosphorylations, molecular O2 is not required. In oxidative phosphorylation, pigment systems are not involved, but in photophosphorylation, pigment system first and second are involved. In oxidative phosphorylations, it occur in electron transport systems, but in photophosphorylations occur during cyclic and non-cyclic electron transport. In oxidative phosphorylations, ATP molecules are released to cytoplasm and used in various metabolic reactions of the cells. In photophosphorylations, ATP molecules produced are utilized for CO2 assimilations in the dark reactions of photosynthesis. So mainly after that efficiency of respiration. So mainly respirations of efficiency. The total energy contents of one molecule of glucose is 686 kilocalorie. Out of this energy, available free energy is 673.6 kilocalorie, and the energy contents of ATP molecule is calculated as 7.3 kilocalorie. The efficiency of respiration may be expressed as follows: kilocalorie energy conserved in ATP, efficiency of respiration upon total free energy available multiply by so. तो mainly जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर टोटल 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और 1 एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी अपने को मिलती है. तो टोटल जो फ्री एनर्जी अवेलेबल होती है वो 673.6 होती है. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करने अपन करते हैं तो मेनली 41% जो एफिशिएंसी एरोबिक रेस्पिरेशन की वो होती है. बट इन एरोबिक एनारोबिक का जो कंडीशंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 2 एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है और 2 एटीपी 1 एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है और जो नेट गेन है वो 47 होता है. तो इस प्रकार इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर 31 जो एटीपी है उसका फॉर्मेशन जो एफिशिएंसी है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कवर होती है. एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन के अंदर मेनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है. 2 into 7.3 अपन 40 करते हैं तो इसका जो मेनली एफिशिएंसी है वो 36.5 होती है. तो इस प्रकार मेनली जो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा कन्वर्ट होता है और जो मेनली एटीपी का फॉर्मेशन है या एनर्जी का जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है. तो इस प्रकार मेनली अपना जो रेस्पिरेशन रिएक्शंस है वो
मेनली डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा कन्वर्ट होती है, और जो लास्ट के अंदर जो एटीपी है या एनर्जी है उसका फॉर्मेशन होता है, और जो रेजोल्यूशन एफिशिएंसी है उसको मेजर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।